Today we are going to discuss the gram-positive cocci, that is the Streptococcus. In this lecture, we will focus on the characteristics or the properties of the Streptococcus, classification of the Streptococcus, and different virulence factors that plays a very important role in the pathogenesis of the infection. Streptococcus is the gram-positive spherical cocci. Mainly, these are present in the spherical form, and cell wall of the Streptococcus is thick, having the thick layer of peptidoglycan. That's why these are the gram-positive, and these are mainly the shape of the Streptococcus is the coccus shape, and they are arranged in the chain or pairs, just like this chain. That's why these are called the Streptococcus. When the bacteria divide in a single plane, and after division in a single plane, they attach with each other and form a chain. And when these are the coccus, then the bacteria is called the Streptococcus. A long chain of the spherical bacteria, that is called the Streptococcus. So Streptococcus are gram-positive and spherical. The general shape of the cell is spherical, but they can also be appear ovoid or rod-like. Sometimes इनकी structure ovoid-like भी हो सकती है और rod-like structure भी हो सकती है, especially in actively dividing young cultures. Important properties of the Streptococcus. Streptococci are non-spore-forming and non-motile except for occasional flagellated strains. Very rarely these are the motiles. Mainly these are the non-motiles, and they can form capsules and slime layers. Capsulated होते हैं. They are facultative anaerobes that ferment a variety of sugars, usually with the production of lactic acid. Homofermentatives वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ फर्मेंटेशन होती है और सेम प्रोडक्ट बनते हैं. ओनली लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा. दैट्स व्हाई दीज आर द होमोफर्मेंटेटिव. स्ट्रेप्टोकोक्काई डू नॉट फॉर्म कैटालेज. कैटालेज नेगेटिव होते हैं, बट they do have a peroxidase system for inactivating hydrogen peroxides. जो free radicals होते हैं उनसे उनको inactivate करने के लिए peroxidase system होता है, which allows their survival in the presence of oxygen. Most pathogenic forms are fastidious in nutrition and require enriched media for cultivations. They require an enriched media, special media for their growth. Colonies are usually small, non-pigmented, and glistering. Most members of the genus are quite sensitive to drying, heat, disinfectants, and drugs. Different drugs से, heat से, disinfectants से और drying से sensitive होते हैं. They can easily kill by using heat, disinfectants, and drugs. A few members such as the pneumococci and enterococci have developed significant drug resistance. One of the most important characteristics for the identification of streptococci is the type of hemolysis. There are different types of hemolysis: alpha hemolysis, beta hemolysis, and the gamma hemolysis. Alpha hemolytic streptococci form a green zone around their colonies as a result of incomplete lysis of red blood cells in the agar. जब एगर में रेड ब्लड सेल्स की इनकम्प्लीट लाइसिस होगी, उससे ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा, ग्रीन जोन प्रोड्यूस होगा, और वो बैक्टीरिया, वो स्ट्रेप्टोकोक्काई जो ग्रीन जोन प्रोड्यूस करते हैं, इनकम्प्लीट लाइसिस करते हैं आरबीसीज, दीज आर called the alpha hemolytic streptococci. The green color is formed when the hydrogen peroxide produced by bacteria oxidizes hemoglobin red color to biliverdin green color. की प्रोडक्शन बिलीवर्डिन की वजह से है. बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोक्काई फॉर्म ए क्लियर जोन अराउंड देयर कॉलोनीज बिकॉज कंप्लीट लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स अकर्स. जब आरबीसीज की कंप्लीट लाइसिस होगी, क्लियर जोन बनेगा, दैट इज कॉल्ड द बीटा हेमोलिसिस, एंड द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोक्काई. बीटा हेमोलिसिस इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स हेमोलाइसिन्स called the streptolysin O or streptolysin S. Some streptococci are non-hemolytic. These are called the gamma hemolysis या gamma hemolytic streptococci. जो hemolysis नहीं करते, non hemolytic होते हैं, उनको gamma hemolytic बैक्टीरिया बोलते हैं. This is the beta hemolysis, complete hemolysis हो रही है आरबीसीज की. दिस इज अल्फा हेमोलिसिस, इनकम्प्लीट हो रही है, ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो रहा है, और गैमा हेमोलिसिस में देयर इज नो हेमोलिसिस. सो अल्फा, बीटा एंड गैमा. अल्फा में इनकम्प्लीट, बीटा में कंप्लीट, और गैमा में नो हेमोलिसिस. Diseases of the streptococci. Streptococci cause a variety of infections.
इनकी जो इन्फेक्शंस हैं बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस is the leading bacterial cause of pharyngitis and cellulitis. It is an important cause of impetigo, necrotizing fasciitis, and streptococcal toxic shock syndrome. It is also the inciting factor of two important immunological diseases like the rheumatic fever and acute glomerulonephritis. ये दो डिजीज इनकी इम्यूनोलॉजिकल बेस पे हैं जिसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और एंटीबॉडीज अपनी सेल्स के अगेंस्ट रिएक्शंस करती हैं, अपनी सेल को टारगेट करती हैं, उससे rheumatic फीवर और glomerulonephritis की डिजीज प्रोड्यूस होती है। स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टी दैट्स अ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इज द लीडिंग कॉज ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस। Enterococcus faecalis is an important cause of hospital-acquired urinary tract infections and endocarditis. V-dense group Streptococci are the most common cause of endocarditis. Streptococcus bovis, also known as Streptococcus galeolyticus, is an uncommon cause of the endocarditis. Both Enterofaecalis and Streptococcus bovis grow on bile esculin agar. दोनों bovis और faecalis जो हैं bile esculin agar में grow करते हैं, whereas other Streptococci do not grow on the bile esculin agar. They hydrolyze the esculin and this results in the characteristic black discoloration of the agar. उसमें जो color है वो black color produce होगा agar का. That is the base for identification of the faecalis and bovis. क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई चूंकि डाइवर्स ग्रुप है इसलिए इनको मुख्तलिफ बेस पे क्लासीफाई करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई आर ए लार्ज एंड हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड नो वन सिस्टम सफिसेस टू क्लासीफाई देम। बहुत लार्ज है, हेट्रोजीनियस है, कोई एक सिस्टम उसको क्लियरली क्लासीफाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। येट अंडरस्टैंडिंग देयर टैक्सोनॉमी इज की टू अंडरस्टैंडिंग देयर मेडिकल इंपॉर्टेंस। फिर भी उसकी जो टैक्सोनॉमी है मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई इनटू मेजर कैटेगरीज हैज बीन बेस्ड ऑन a series of observations over many years. कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एंड हेमोलिटिक रिएक्शंस ऑन ब्लड एगर, इसकी बेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, अल्फा है, बीटा है या गेमा है। सीरोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी की बेस पे द सेल वॉल ग्रुप स्पेसिफिक सब्सटेंस, लेंस फील्ड एंटीजन्स एंड अदर सेल वॉल और कैप्सूल एंटीजन की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड रेजिस्टेंस टू फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं एंड इकोलॉजिकल फीचर्स की बेस पे। सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट आर यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई: कॉलोनी एंड हेमोलिटिक, serological based on the antigen or the capsule based, cell wall based, biochemical reaction and ecological features. Beta hemolytic streptococci कौन से होते हैं? These are arranged into group A to U. इनको हमने A to U group में रखा हुआ है. These are known as the lens field groups on the basis of antigenic differences in the C carbohydrate. जो लेंस फील्ड है उसने जो क्लासिफिकेशन दी है वो सी कार्बोहाइड्रेट की बेस पे दी है। These C carbohydrate are the component of the cell wall. In the clinical laboratory, the group is determined by precipitin test with specific antisera or by immunofluorescence. Group A streptococci, that is the Streptococcus pyogenes, are one of the most important human pathogens. They are the most frequent bacterial cause of pharyngitis and very common cause of skin infections. They adhere to pharyngeal epithelium via villi composed of lipoic acid and M proteins, जिसके virulence factors हैं. Many strains have a hyaluronic acid capsule that is antiphagocytic. The growth of the Streptococcus pyogenes on agar plates in the laboratory is inhibited by the antibiotic bacitracin, an important diagnostic criterion. तो bacitracin के लिए sensitive है. Group B Streptococci, that is Streptococcus agalacti, colonize the genital tract of some women and can cause neural meningitis and sepsis. They are usually bacitracin resistant. जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है वो बेसिट्रसिन सेंसिटिव है, जो एगालेक्टी है वो बेसिट्रसिन रेजिस्टेंट है। दे हाइड्रोलाइज ब्रेक डाउन ऑफ द हेपोरेट, एन इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन। तो हेपोरेट की जो हाइड्रोलाइसिस है वो स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टी की डायग्नोसिस में या उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल है। ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई इंक्लूड एंटेरोकोकाई, एंटेरोकोकस फेकालिस एंड एंटेरोकोकस फेशियम एंड नॉन एंटेरोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस बोविस.
Enterococci are the members of the normal flora of the colon and are noted for their ability to cause urinary, biliary, and cardiovascular infections. Non-enterococcal group D streptococci, such as the Streptococcus bovis, can cause similar infections but are much less hardy organisms. They are inhibited by 6.5% NaCl and killed by penicillin G. The hemolytic reaction of group D streptococci is variable. जो ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई है उसके hemolytic reactions variables हैं. Most are alpha hemolytic, some are beta hemolytic, and others are non-hemolytic. Group C, E, F, G, H, and up to K to U streptococci infrequently cause the human disease. उनका जो human के साथ कोई strong link नहीं है. Non-beta hemolytic streptococci. Non-beta-hemolytic streptococci कौन से हैं? Some streptococci produce no hemolysis. Other produce alpha hemolysis. The principal alpha hemolysis organisms are the Streptococcus pneumococci, and the virulence group of Streptococci, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguinis, and Streptococcus mutans. Mitis, sanguinis, and the mutants. Pneumococci and virulence streptococci are distinguished in the clinical laboratory by two main criteria. The growth of pneumococci is inhibited by optocin, whereas the growth of virulence streptococci is not inhibited. And the colonies of pneumococci dissolve when exposed to bile soluble, whereas the colonies of virulence streptococci do not dissolve. दोनों अल्फा हेमोलिटिक हैं, लेकिन दोनों को किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे? एक ऑप्टोचिन की बेस पे, दूसरा बाइल की बेस पे. ऑप्टोचिन की बेस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्टोचिन द न्यूमोकोकाई इज इनहिबिटेड. न्यूमोकोकाई जो वो सेंसिटिव है ऑप्टोचिन का, जबकि विरुडेंस जो है वो रेजिस्टेंस है ऑप्टोचिन का, उस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑप्टोचिन का विरुडेंस पे. और जो दूसरी बेस है उसकी बेस पे हम बाइल सॉल्युबल की बेस पे करेंगे. जो न्यूमोकोकाई है वो डिसॉल्व होता है बाइल में, और जबकि विरुडेंस डू नॉट डिसॉल्व. Virulence streptococci are part of the nanoflora of the human pharynx and intermittently reach the bloodstream to cause the infective endocarditis. Streptococcus mutans synthesizes polysaccharide dextrans that are found in dental plaques and lead to dental caries. Streptococcus intermedius and Streptococcus anginosus, also known as Streptococcus anginosus milleri group, are usually alpha hemolytic or non-hemolytic, but some isolates are beta hemolytic. They are found primarily in the mouth and colon. Peptostreptococci. These grow under anaerobic or microaerophilic conditions and produce variable hemolysis. इनकी जो ग्रोथ कंडीशंस हैं वो एनारोबिक हैं या माइक्रोएरोफिलिक हैं और वेरिएबल हेमोलिसिस प्रोड्यूस करते हैं. पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई आर मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द गट, mouth, and female genital tract and participate in mixed anaerobic infections. The term mixed anaerobic infections refers to the fact that these infections are caused by multiple bacteria, some of which are anaerobes and others are the facultatives. For example, Peptostreptococci and virulence streptococci, both members of the oral flora, are often found in the brain abscesses found following dental surgery. Peptostreptococcus magnus and Peptostreptococcus anaerobius are the species frequently associated from the clinical specimens. स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज को अगर हम जनरली क्लासिफाई करें तो बीटा हेमोलिटिक हैं या अल्फा हेमोलिटिक हैं. बीटा हेमोलिटिक में बेसिटिन सेंसिटिव है और बेसिटिन रेजिस्टेंस है. बेसिटिन सेंसिटिव में जो मेजर ग्रुप है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, और बेसिटिन रेजिस्टेंस में ग्रुप बी और सी स्ट्रेप्टोकोका है जिसमें एगलेक्टिस आते हैं. और अल्फा हेमोलिटिक की बात करें तो अल्फा हेमोलिटिक में ऑप्टोचिन सेंसिटिव है और ऑप्टोचिन रेजिस्टेंस है. ऑप्टोचिन सेंसिटिव में निमोनिया आएगा और ऑप्टोचिन रेजिस्टेंस में ग्रुप डी एंड द virulence streptococci आएंगे. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पैथोजेनिक जो स्ट्रेप्टोकोकस हैं उसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और virulence ग्रुप में और एगलेक्टिस है. Transmission of the streptococcal infections. Most streptococci are part of the normal flora of the human throat, skin, and intestines, but produce disease when they gain access to tissue or the blood. Mainly तो normal flora है, लेकिन जब वो
अपनी साइट से दूसरी साइड को ट्रांसफर होंगे, किसी अदर साइड को ट्रांसफर होंगे, जब टिश्यू में या ब्लड में एंटर होंगे तो देन दे विल कॉज द इन्फेक्शंस. Wheat and Streptococci and Streptococcus pneumonia are found chiefly in the oropharynx. Streptococcus pyogenes is found on the skin and in the oropharynx in the small numbers. Streptococcus agalacti occurs in the vagina and colon, and both the enterococci and anaerobe streptococci are located in the colon. Virulence factors of the Streptococcus infections. Surface antigens. C carbohydrate determines the group of beta hemolytic streptococci. It is located in the cell wall and its specificity is determined by an amino sugar. C carbohydrates, specialized polysaccharides found on the surface of cell wall, are the basis of lens field groups. Their apparent contribution to pathogenesis is to protect the bacterium from being dissolved by lysozyme defense of the host. Lysozyme का इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता. For example, group A beta-hemolytic streptococci, Streptococcus pyogenes are distinguished from group B beta-hemolytic streptococci, Streptococcus agalacti, because they have different C carbohydrate. दोनों में कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉम्बिनेशन है, वो डिफरेंट है. लिपोटिकोइक एसिड आल्सो द सर्फेस एंटीजन है. सेल वॉल में डिकोइकस होता है ग्राम पॉजिटिव में, चूंकि स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव है. लिपोटिकोइक एसिड bound to fimri contributes to the adherence of the Streptococcus pyogenes to epithelial cells and in the skin or oropharynx. M protein is the most important valence factor of Streptococcus pyogenes. It protrudes from the outer surface of the cell and blocks phagocytosis. M protein का major role phagocytosis को ब्लॉक करना है. It inactivates C3b, a component of complement that opsonizes the bacteria prior to phagocytosis. C3b acts as an opsonin that help in the process of the phagocytosis. तो M protein C3b को भी inactive करते हैं. Strains of Streptococcus pyogenes that do not produce M proteins are non-pathogenic. M protein also determines the type of group A beta-hemolytic streptococci. There are approximately 100 serotypes based on the M proteins, which explains why multiple infections with Streptococcus pyogenes can occur. क्योंकि 100 different serotypes हैं M protein की base पे. Antibodies to M protein provide type-specific immunity. So type-specific immunity क्योंकि 100 serotypes हैं तो एक ही के against जो M protein जो बनेगी उसी के against वो antibody produce करेगी, उसी के against वो protection provide करेगी. Strains of Streptococcus pyogenes that produce certain M protein types are rheumatogenic. They cause primarily rheumatic fever, whereas the strains of Streptococcus pyogenes that produce other M protein type are the nephrogenic, cause primarily acute glomerulonephritis. Capsule. A capsule made up of hyaluronic acid is formed by the most Streptococcus pyogenes strains. The hyaluronic acid is chemically indistinguishable from the hyaluronic acid found in the human tissue, so it does not provide an immune response from the host. C5a protease catalyzes the cleavage of the C5a protein of the complement system. Experiments suggest that this not only hinders the complement associated aspects of the immune system, but also interferes with the chemotactic response of the neutrophils. These are different surface proteins: C5a protease, M protein, C carbohydrate, peptidoglycan, that is lipoic acid का part है, chromosome internal है, cell membrane, cytoplasm, and the capsule and fimbriae. These are different external components, external valence factors of the Streptococcus species, Streptococcus pyogenes mainly. Extracellular toxins. Major extracellular toxins of group A Streptococci overcome of their virulence to the effective hemolysins called the streptolysins. There are two types of streptolysins, O and streptolysin S, that is called SLO and SLS. Both types cause beta-hemolysis of sheep blood agar. Both hemolysins rapidly injure many cells and tissues, including leukocytes, liver, heart muscles. A key toxin in the development of scarlet fever is called erythrogenic toxin, also known as the pyrogenic toxins. Pyro means because of the fever production. Erythrogenic toxin help in the
production or the development of the scarlet fever. This toxin is responsible for the bright red rash typical of this disease, and it also induces fever by acting upon the temperature regulatory center. Only lysogenic strains of Streptococcus pyogenes that contain genes from the temperate bacteriophage can synthesize these toxins. The retrogen toxin is a strain bacteriophage mediated or lysogenic strain. there इसमें जो बैक्टीरियोफेज या टेम्परेट फेज mediated जीन इन्वॉल्व होते हैं इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन में. Some of the streptococcal toxin, erythrogenic and the streptolysine O, contribute to increased tissue injury by acting as superantigens. These toxins increase the stimulation of certain T lymphocytes. Overactive T cells proliferate and produce a cascade of immune responses that release tumor necrosis factor and other cytokines, which leads to vascular injury. इसमें exaggerated T cell response होगा और उसमें vascular injury हो सकती है और necrosis हो सकता है. This is the likely mechanism behind the severe pathology of toxic shock syndrome and necrotizing fasciitis. Major extracellular enzymes. Several enzymes for digesting macromolecules are virulence factors of group A streptococci. Streptokinase, similar to staphylokinase, activates a pathway leading to the digestion of fibrin clots and may play a role in invasion. Hyaluronidase breaks down the binding substance in connective tissue and promotes spreading of the pathogen into tissues. Streptodornase, also called DNase, liquefies purulent discharges by hydrolyzing DNA. Other antigenic substances that are the part of the streptococcus streptococcal infections. These are the T substances permits differentiation of certain types of the streptococci by agglutination with specific antisera, but other types share the same T substance, which probably make up the most of streptococcal cell body, and R proteins. These are other substances, or other antigenic substances part of the streptococcal infections. We look at the summary of the toxins or virulence factors. There are different toxin proteins. These proteins may be the C carbohydrate protein and the M protein, T and R proteins, C5a proteases, and C3b inhibitors or the C3b inactivators. Other enzymes include the hyaluronidase, streptodornase, streptokinase, and streptolysines. And streptolysines, streptococcal pyrogenic toxin, exotoxins, streptolysins are also the toxins. That's all about the characteristics and different virulence factors of the streptococcal infections. In the next lecture, we will discuss about the pathogenesis, clinical findings, and treatment of the streptococcal infections.